हेलो एवरीवन आपण समस्त को स्वागत आपण प्रिय यूट्यूब चैनल को देखंतु कनिष्ठ शिक्षक आशय खुशी खबर आसी जाऊँगी जो जेटीएस हाईकोर्ट रे देखंतु केस रही था जहाँकि गत काली आपण भर्डिक आसी जाई अछि ए भर्डिक अनुसार देखंतु बस पाइबे कार्य आग को कंटिन्यू करिवो एबे वर्तमान देखंतु बहुत शीघ्र फाइनल लिस्ट आसवाक जाऊँगी ता सहित जो मैंने मेरिट थिले से माने ही देखो विजय लाभ कहते आगुरी जो लिस्ट रही है से लिस्ट ही कायम रु कट ऑफ मार्क देखो कैटेगोरी वाइज आसवाक जाऊ देखो खबर कागज कौन रही 20,000 कनिष्ठ शिक्षक नियुक्ति बाट फिटिला देखिपे ता सहित नियुक्ति प्रक्रिया रब्ध कले हाईकोर्ट कौन से रब्ध कले जो सिंगल बेंच देखो आपंकर रब्ध करते देखो संशोधन हो सारी अच्छी सिंगल बेंच रे जो विचारपति तांको राय देते तांकर आदेश रे देखंतु पुणी थरे देखंतु दुई जणिया खंडपीठ रे देखंतु ताको संशोधन करा जाई अछि तांको आदेश अनुसार ही ए सब प्रक्रिया आग को बढ़ी अछि देखि पारुथिबे एवं ता सहित कह जे अछि सीबीटी एग्जाम रे देखंतु कोनोसी अनियमितता होई नाही जो केस करिथिले सीबीटी एग्जाम रे देखो करप्शन हो सहित विभिन्न कथा को नहीं केस करा जाइथिला जाके कैंसिल करियो किंतु कौन से प्रूफ दे पारले नहीं जदि प्रूफ दे पारिबे नहीं केस करी किछि लाभ नहीं एबे देखो मेरिट रो ओइन हुई अछि सिंगल बेंच रो जो जजमेंट आसला ताको देखो संशोधन करा जाई अछि तांकर आदेश रे जो विचारपति देथिले तांको आदेश रे ही देखो याको संशोधन करा जाई अछि आपण देखि पारुथिबे वर्तमान प्रोसेस कंटिन्यू केबे हेबो एवं केते जल्दी प्रोसेस शेष होबाको जाउछ ओसे पर केते जल्दी प्रोसेस को शेष करी आ को बढ़बो देखो सिंगल बेंच रे को जेतेबेले संशोधन होई सारी होचे एबे जो लिस्ट होइछे से लिस्ट ही कायम रहउची एबे फाइनल लिस्ट ही आसीबाको जाउची ता सहित फाइनल लिस्ट तो देखंतु कैटेगरी वाइज एवं सब्जेक्ट वाइज देखंतु आपनकर कट ऑफ मार्क शो करा जिवो लास्ट कट ऑफ केते जाउची डिटेल्स आसीबाको जाउची काहे कि ना कोर्ट ताहा मेंशन करिसंती कट ऑफ मार्क सहित प्रेफरेंस को प्रायोरिटी देबा पई देखंतु प्रथम देखंतु प्रेफरेंस को मेरिट आसे सारला पर ही प्रेफरेंस को प्रायोरिटी दिया जिवो जो माने मेरिट आसीबे से मान को देखंतु प्रेफरेंस प्रायोरिटी दिया जाय अछि से पर ही देखंतु ओसेपा करिथिला किंतु कट ऑफ मार्क शो करि नथिला कट ऑफ मार्क देखंतु निश्चय बहुत शीघ्र आसीबाको जाउची कट ऑफ मार्क शो देखंतु फाइनल लिस्ट मध्ये अवेलेबल होई जिवो अपेक्षा करंतु ए प्रोसेस बहुत शीघ्र शेष होबाको जाउची कट ऑफ मार्क आसीबो ता सहित आपन ओसेपा आगो कोई प्रोसेस को कंटिन्यू करी शेष करिबा पई चेष्टा करबो जो नुआ लिस्ट आसीबो ता सहित पुणी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेबो जो कह जाउची कोन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेबो नहीं जो लिस्ट रही थी से लिस्ट ही रहिबो किंतु कट ऑफ मार्क जो शो ही नथिला ताहा देखंतु कट ऑफ मार्क सब्जेक्ट वाइज एवं कैटेगरी वाइज आसीबाको जाउ अछि जो डिस्ट्रिक्ट वाइज मंगा जाउथला देखंतु ताहा केवल सब्जेक्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज ही देखंतु कट ऑफ मार्क अवेलेबल हेबाको जाउ अछि बहुत शीघ्र ता सहित फाइनल लिस्ट देखंतु आपनकर जो मन रिजेक्ट होई नाहंते तांकर ही फाइनल लिस्ट शीघ्र आसीबा को जाउ अछि अपेक्षा करंतु निश्चय देखंतु 20,000 कनिष्ठ शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शेष होबाको जाउछि ता सहित गत कालीर किछि क्लिप मत देखिनंतु जज कोन राय दैछंती 23 and other follow up provisions under the resolution to operate which is patently discriminatory and violative of articles 14 and 16 of the Constitution of India, though the said provisions have not been challenged by the parties. It will otherwise amount to requiring the appellate state of Odisha to follow a procedure in the matter of public employment, despite the said procedure having been found to be unconstitutional in the light of a constitution bench decision of this court in case of P. Rajendran. After having concluded as above, we are of the considered opinion that the entire selection process undertaken by the appellants
for recruitment to the post of junior teacher schematic should not be declared illegal, as that will hinder the completion of process of selection and seriously affect the teaching / education at the school level because of dearth of teachers. We deem it expedient in the interest of justice in the given facts and circumstances of the case to resolve the absurd situation arising out of the stipulation in paragraph 8.3 of the resolution dated 22/8/2023 in a manner that is just, equitable, fulfills the mandate of Articles 14 and 16 of the Constitution of India, and at the same time furthers the objective of Article 21A of the Constitution, read with the provisions of the RT Act. For the said purpose, we consider it just and proper to issue following directions for the selection process in question. No illegality has been noticed in the conduct of the CBT. Therefore, the marks scored by the aspirants in CBT shall be the basis for determination of the merit of the aspirants. Second, based on the CBT held by OSEPA, the state appellant shall fix first set of minimum cutoff marks, category-wise, subject-wise, taking into account total number of posts advertised, considering the marks secured by respective candidates in the said test. Select lists shall be prepared of such candidates having secured the cutoff marks or above. The preference given by the candidates at the time of application shall be considered for allocation of districts based on merit cum preference. The minimum marks scored by candidates declared successful by OSEPA, subject-wise, category-wise, may be fixed as the first set of minimum cutoff marks. It will be open for the state appellants to refix the set of cutoff marks later from time to time in the event the posts remain unfilled because of non-joining of candidates or other similar reasons, which shall be confined to the number of posts advertised. In view of the admitted fact that score of writ petitioners in the online CBT is less than the minimum marks scored by candidates declared successful by OSEPA, subject-wise, category-wise, we allow the state appellants to appoint such candidates taking into account their merit based on score in the CBT and direct preference and district preference for the purpose of allocation of a district. It goes without saying that cases of the writ petitioners shall be considered against leftover vacancies in terms of the direction as above. The directions issued by the learned single judge stands modified accordingly. The writ appeals stand disposed of. Item number 5, WPC 7776.